किसने कॉल करनी है? Where it is written? Who will call the full court meeting? So that is to be called by the Chief Justice. So it says the committee now. Where it is written? So this is the practice. Committee will, including meetings and constitution of benches with the committee now. Sir, वो full court meeting की बात कर रहे हैं, not the constitution of benches. तो इसका मतलब Sir, that is a practice, your lordship. नहीं तो practice तो यही है ना कि that is to be done by the other Chief judges Justice. can call the meeting and amend the rules. Yes. And they do it. Sorry? If the Chief Justice doesn't want to amend the rules, then the other judges can call the meeting and amend the rules. नहीं उसमें नहीं है. Sir, these are very difficult questions which I need to really think आपके about. सामने एक सिचुएशन चीफ साहब ने रखी है जी बिल्कुल. कि अगर मैं केस फिक्स नहीं करता तो क्या रेमेडी होगी आपके सर पास? मुझे इन सवालों the other judges would be silent spectators. यही है ना. Can they call the convene the ये meeting जो and amend the rules? conflicts है within judges, इनके बारे में इसका जवाब इसी लेजिस्लेशन में दिया हुआ है. 2 सबसेक्शन 2 पढ़े. नहीं वो कमेटी की मीटिंग है. फिर वो कमेटी, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस. इसके ऊपर जब शुरू करेंगे तो उसमें कौन सी चीज रह गई है? एवरी कॉज अपील मैटर वो बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ये सब कुछ हो जाएगा. नहीं सर, ये जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस हैं. उनका सवाल वो सवाल ये है कि इसमें कौन सी चीज है जो इसमें ओमिट की गई है. सर आई वुडंट लाइक टू रीड मैटर एज इन्वॉल्विंग फुल कोर्ट मीटिंग्स. ना ये पहली दफा सिचुएशन अराइज हो रही है, जैसे अभी पॉइंट आउट किया गया, तो उसको हम एग्जामिन कर रहे हैं. तो वी नीड योर असिस्टेंस. व्हाट इज योर व्यू पॉइंट? फुल कोर्ट कॉल करने का तो वैसे भी रूल्स में तो कोई प्रोविजन नहीं है. कोई प्रोविजन नहीं. बिल्कुल नहीं. दिस इज प्रैक्टिस. देखिए साहब, जी लाइटर नोट, इतने पैसे क्लाइंट ने नहीं दिए. अब मैं अपने आप को शर्मिंदा नहीं करना चाह रहा. These are very difficult questions, my lord. I really have to think about that these conflict within judges, how are those to be resolved, whether writs are to be issued, what are the other mechanisms. These have no easy answers. मुझे इस केस के ऊपर सोचते हुए इतने हफ्ते लग गए. I think what your lordships are taking will take me 6 months to really think about. मिस्टर सिद्दीकी, हमने सुना है कि यू आर ए स्पोर्ट्समैन. कभी कोई टीम ऐसी देखी है जिसके 3 कप्तान और वो जीती हो? And Mr. Siddiqui, you can ask for the in-camera proceedings. वैसे सिद्दीकी साहब, स्पोर्ट्स से मेरा भी ताल्लुक है. कप्तान और वाइस कप्तान जरूर होते हैं. सर सुप्रीम कोर्ट में होपफुली कप्तान भी होना चाहिए. सर लेट्स मूव ऑन. आई जस्ट रनिंग थ्रू. सिद्दीकी साहब, कैप्टन एक ही अच्छा लगता है. Sir, Section 4, sir. Section 4 says that whenever an interpretation of constitutional provision is involved, a bench should not be less than 5. I think That is again a dictation. My lord, I mean it is. Shall not be. My lord, it's. Why can't the committee say, well, this is an important matter? But how will that affect? If there is a substantial question of law, I don't have a question of how will it affect. All along my question is, who is saying it? Who is constitutionally competent to lay down this principle? If this rule can be laid down by the court in its rules, and if Parliament has legislative, in terms of its rule-making powers under 191. Sir, if Parliament has legislative power, then your lordship has to see whether this rule violates a principle. That's a big if. Yes. If Parliament has no legislative power, then this law goes, this provision goes. Otherwise, one looks at this provision. Mr. Faisal, according to you, the Parliament has the legislative. Yes. And the only move on. According to you, Parliament has the power. We will decide whether Parliament has power or not. Now move on. ये clarity इसमें सिर्फ ये. If the Parliament, if we come to the conclusion that yes, of course, Parliament has the power to make a law, then in law the Parliament may use the word may or may use the word shall. But even Parliament cannot make a law which will destroy the power of the Supreme Court to make rules and violates the independence of the court. Okay, so tomorrow the Supreme Court full court says, well, we think 5 judges are not enough, or 5 judges are too much. We want to make it 3. Can they do it?
In terms They of this, cannot, according in to the you, presence they of this law, they cannot. Yes. Yes. So And that means a power of this court has been trumped by a Sir- legislative instrument. Sir, ye, चले आगे बढ़े ना ये आप the question should be what fundamental rights or independence of the judiciary has been violated. The only thing was that it's a bit badly drafted. The term is actually a substantial question of law involving interpretation. यही term use हुआ है Article 185 2F में. और यही term देखिए कोई नई बात करें तो जी, फिर दूसरों को जी, सुन लेते जी, हैं जी एक सर, सेकंड, एक आपने क्या दिया, 3 को रीड डाउन कर दें, सिर्फ 3 को. ठीक है. 4 is badly drafted. अभी हम 4 पे आए हैं, अभी आगे 5 से Sir, you have an uphill task. no, but sir, the point is, this is, has ever a law been struck down because of bad drafting? No. Or being No. impractical? A law No. can be struck down on various grounds. Yes. One of which is it is vague, it is unclear, it is Not on beyond, bad drafting. It is beyond legislative Yes, competence. but not on bad drafting. अब एक criminal lawyer ने ये law बनाया तो वो constitutional problems तो कुछ होंगी sir. Sir, section 5 sir. is that a confession? You are saying it behind his back. Sir, मुझे तो यही समझ में आता है. नहीं ये ना अब करें. now I come to the main question, which is this problem of a full court and there being no appeal. And the problem that if there are 8 or more, if there are 9 judges, there would be no appeal. नहीं मगर इससे पहले तो आप ये तो आपने गिवन कर लिया प्रॉब्लम है. देखिए ये ऐसे ना अप्रोच. नहीं, आप देखिए मौजूदा सूरत हाल में बेहतर थी खराब थी. ये तो कहना ये प्रॉब्लम है कि फुल कोर्ट हो गया तो अपील नहीं है. तो फिर आप इस कानून मैं इसका जवाब दे रहा हूं. नहीं जवाब नहीं होगा. ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है. मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं हो सकता है. सवाल इसलिए नहीं उठेगा. सवाल तो valid है. जरा सुन तो लीजिए ना, आप समझने की कोशिश कीजिए ना. मौजूदा सिस्टम क्या है, इस कानून को एक तरफ रख दीजिए. आप जरा तवज्जो दीजिए. जी जी. मौजूदा सिस्टम ये कि इस कानून को 1 मिनट एक तरफ रख दीजिए. ठीक है. अब कौन सी अपील है ही नहीं ना. तो अब आप कह रहे हैं ये कानून जो आया है 99% खामियों और प्रपोर्टेड खामियों को दूर करने के लिए, वो इस लिहाज से बुरा है क्योंकि वो 1% केसेस जिसमें फुल कोर्ट होगा कोई अपील नहीं है. तो पहले तो फिर अगर आपका ये बात मान ली जाए तो आप फिर तो आप ये कह रहे हैं, आपकी बात में ये इम्प्लाइड है कि ये कानून दुरुस्त है. अब आप 1% के लिए भी अपील प्रोवाइड कर दें तो फिर ये निकलेगा. या तो आप कहेंगे कि जी 99% तो मसला सॉल्व हो गया है, 1% कराएंगे. मैं यही बात कहूंगा कि the mere fact that there isn't an appeal in certain category of cases would not make the law unconstitutional. And I'll tell you why. They may most certainly be a difference of opinion. One person can think that this is not relevant, but I think that it is very relevant. Because when the law gives a right of appeal and the committee has the option of taking that right of appeal away, then it is relevant to the person whose right of appeal has been taken away. If we recognize appeals as being substantive, then that so-called arbitrariness that is being controlled, I don't see how it's being controlled. Because किसी को right मिलेगा, किसी को right नहीं मिलेगा. Again the question will be, ये कैसे decide होगा? Again we'll go looking and hunting for principles. कि कौन सा principle apply करें. So on the face of it, it means that either you can't ever constitute a full bench, you can't constitute a bench which is more than 7 or 8 members, that's it. You're not allowed to do that because Parliament has said appeal होनी चाहिए. और appeal होनी चाहिए का मतलब है that every order of the Supreme Court under 185(3) has to have a right of appeal. It doesn't mean that I have the option to choose कि अब full court बैठ गया तो सब अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब ने केस सुन लिया. Right of appeal is a right of appeal, which we've heard at length yesterday, how we recognize that right of appeal, how Islam recognizes that right of appeal. So यहाँ कैसे हम वो right ले लेंगे वापस and कहेंगे नहीं यहाँ नहीं है क्योंकि हम सब बैठ गए. Mr. Faisal, if you look at to me it appears to be an intra-court appeal. Yes. So at the High Court, if the larger bench is constituted, there's no intra-court appeal. Sir, so if there's a larger bench, there's no appeal. There are 3 restrictions
on an appeal from a single judge in an inter-court appeal. अच्छा ये इसमें एक और बात अगर आप मद्देनजर रखें, हम अगेन realm of conjecture सिंगल बेंच इस वजह से जब डीबी सुनती है या 3 जज सुनते हैं तो इसलिए उसकी अपील नहीं जाती. लॉ रिफॉर्म itself provides an answer. The appeal provides where a single judge decides the question. जी मैं एक मिनट आप सर जी देखिए, हम कंजेक्चर समाज से भी बात कर सकते हैं. अब आप मुझे बताइए आखिरी इस फुल कोर्ट से पहले कौन सी फुल कोर्ट थी? आई थिंक 2015 सर. कितने साल गुजरे? जी 8 साल हो गए. तो हम उस केस के लिए सिर्फ फिक्रमंद हैं या हम फ्यूचर के लिए फिक्रमंद हैं? दो बातें हो सकती है ना. एक तो पिछले के लिए हम फिक्रमंद हैं कि वो केस में वो जो 21वीं अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक राइट ऑफ अपील सलब हो गई और वो नहीं हो सकती है. ठीक है, ये एक मफरूजा हो सकता है. ठीक है. दूसरा है कि नहीं, हम पिछले के लिए फिक्रमंद हैं तो हम फ्यूचर के लिए फिक्रमंद. फ्यूचर की जब बात आएगी, जब एक्चुअल बात आएगी हमारे सामने, फिर हम अगर आप हमें इतना रिस्पेक्ट देते हैं कि हम आपस में कुछ समझ लेंगे इसको. हमें ये तो नहीं बताना है कि फ्यूचर में क्या होगा. हमारे सामने जो मसला आता है, और हमेशा ही कहा गया है, उसी मसले को हल करो जो आपके सामने आ जाए. अब क्या मसला होगा आइंदा, हो सकता है कभी फुल कोर्ट होना, हो सकता हो जाए. तो जब वो मसला आएगा फिर आपको सुनेंगे कि फुल कोर्ट बैठना चाहिए, 7 मेंबर बैठना चाहिए, 10 मेंबर बैठना चाहिए. वो सारे बातें इशू खड़े हो जाएंगे. अभी तो फुल कोर्ट एक ही बैठी थी, मुझे जहाँ तक याद है, आपकी बात सही है, 2015 में 21वीं अमेंडमेंट की बात. उसके बाद तो फुल कोर्ट नहीं बैठी. तो ये आई है दूसरी दफा फुल कोर्ट तारीख में. My answer to the question. This is one way of When legislation is framed, the legislators are supposed to look at all eventualities and try as far as possible to cater for them. Now, it is so obvious that there is this defect in this law. Was it debated? Was it thought about? Was there a thought process? And thereafter it was drafted, keeping in mind कि जी फुल अगर कोर्ट हियरिंग करेगा तो उसकी अपील नहीं होगी. And if it was thought about it, why was it not mentioned in the my provision? response would be, so the obvious conclusion is that there is a flaw, and there is the no flaw flaw. is so apparent There is no that flaw. everybody can see it. No, there is no flaw. It's a self-contradictory question. When you say that there should be an appeal in the full court, no legislature in the world can provide an appeal. Nobody to is saying that there should be an there appeal. can never be an appeal to the Supreme You Court. have actually There can misunderstood. never. It's a No, Mr. Siddiqui, self-contradictory the question is not whether there should be an appeal in the full court. The question is simply that how will this right of appeal be exercised if you cannot constitute a larger bench because you have been stopped from doing so. Which means that when a full court, if the committee decides, whereas in this case, where a full court is sitting, if this law is upheld, that there is no right of appeal. So the question is simply this, that aapne right of appeal. block kar diya na right of appeal. What is the point of giving that right? कोई legislature दुनिया का अपील दे ही नहीं सकता. There is another aspect to it. But I come to the 9 judges thing. Actually, there is no answer to this question. No, there is an answer. We go around and put a full stop to it. कि जब full court में हम बैठ के, यानी कि हमने जब decide कर लिया full court, तो then there is no right of appeal. ऐसी चीज की deprivation किस तरह मांग सकती है? You have deprived someone something that the lawmaker thought was essential. I think it's That's not what you've done. it's not a problem at all. It's not a problem at all. But मैं कहता हूँ, अच्छा ये 9 मेंबर की साहब ये देखिए एक सेकंड, सेक्शन 5 में लिखा हुआ है, सेक्शन 5 पढ़ लीजिए. ये जो पावर है राइट ऑफ अपील का, आपने तीन जजेस की कमेटी को दे दिया कि किसमें वो राइट ऑफ अपील देंगे और किसमें नहीं देंगे. सर मैं उसका जवाब दे दूं. मैं उसका जवाब दे देता हूँ. देखिए, full court I don't think even a right of appeal can be demanded. Now the issue is that in cases. No, where does the law say that? Sir, it is an impossibility. You cannot provide. 50 जज भी हो जाए किसी कोर्ट की, आप फुल कोर्ट की अपील किस तरह? लार्जर बेंच बन नहीं सकती ना. देखिए सदीकी साहब the point that it has not even. सदीकी साहब जरा देखिए इसमें It has not even been debated. अपील में ये बताया गया है कि the appeal shall be heard by the larger bench. ठीक, लार्जर बेंच के नंबर्स नहीं बताए कि क्या एक जज मजीद बैठ के लार्जर बेंच होगा
2 जज मजीद उसमें लार्जर होंगे। बेंच तो हो ही नहीं सकती ना इसके अंदर, जब फुल कोर्ट हो गया तो देयर इज नो लार्जर बेंच फॉर सॉरी सर, सुन ले लार्जर बेंच की प्रोविजन भी हो सकती है अगर ऐसी सिचुएशन आए। It's a matter of interpretation by the court and it's sorted. ये हम रूल्स में देख सकते हैं। इवन कॉन्स्टिट्यूशन में जरा, इवन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये इजाजत देता है whenever there is need, as per the constitution, a judge of any high court can be called for a particular case. तो लार्जर बेंच बनाने So इसमें भी हम रीड इन कर going on too लेते much हैं, ये इसमें भी हम रीड इन कर लेते हैं कि ऐसे करना ऐसे करना। So आप 2 प्रोविजंस हो गए, रीड इन एक होगी बैडली ड्राफ्टेड, ऐसे ही करते हैं। रूल्स में कर सकते हैं। Rules cannot read down something which the legislature could never do. मिस्टर सिद्दीकी, आप रिडंडेंसी तो इस अपील में रिडंडेंसी तो नहीं एट्रीब्यूट कर सकते ना। आपने अपील प्रोवाइड करनी है नहीं, एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड रिडंडेंसी, अच्छा नहीं करनी। But- लार्जर बेंच का कह रहे मतलब नहीं। ये फुल कोर्ट के ऊपर अपील नहीं होगी। आगे बढ़े, आपका हमने मौके सुन लिया। Hold हो on, गया है let point. me complete. In order to preserve that right, in order to preserve the right of appeal, in essence, you can never constitute a full court. सर बिकॉज फुल कोर्ट पे अपील हो ही नहीं सकती, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूट आप उसको। In that case, there will be no appeal. चलिए आगे बढ़े। आगे चलें। सर आपका मौके सुन लिया, हमने कहा नहीं हो सकती। चलिए अगले बात बताएं। Subsection